wonderful day. Enjoy the ending moment is oncoming. प्यारे विद्यार्थियों, समस्त मित्रों और दर्शकों सभी को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर हम सब एक दूसरे के प्रेम से मिलकर रहना सीखें। साथ ही साथ अब हमें ये देखना है कि आने वाले जो विद्यार्थीगण हैं, पूर्व में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो समय है वो अब पूरी तरीके से 12th की प्रिपरेशन का है, क्योंकि आप समझ रहे हैं फरवरी बीत चुका है और उसके बाद आपका अगला जो उपक्रम है उसके अंतर्गत आपको 12th की तरफ बढ़ना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में रोज सेक्शन से जो 12th का सिलेबस है जिसका सेक्शन डी लिटरेचर, उसमें हम पहले चैप्टर को ग्लांस यानी नजर में रखते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी जो समरी है वो हिंदी में बता देना उचित होगा। यह जो पाठ है ये फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन पर आधारित है। अल्सास और लॉरेन फ्रांस के ये दो जिले जो थे, वो जब प्रसा का उत्कर्ष हुआ तो वहां का शासक जो बिस्मार्क था उसने इटली और जर्मनी के साथ तीनों को एक में मिला करके अपने आप को सशक्त कर लिया था और उसने फ्रांस के इन दोनों जिलों को अपने अधिकृत कर लिया था। फ्रांस में स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी भाषा इन विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब यहाँ पर उसका शासन हो गया तो अब ये आदेश जारी हुआ कि फ्रांस और अल्सास में जो दो जिले हैं अल्सास और लॉरेन, इन दोनों जिलों में फ्रांसीसी भाषा के बजाय बर्लिन से आदेश आ गया कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इस वजह से जो यहाँ पर फ्रेंच टीचर थे, लैंग्वेज टीचर, वो काफी हुए और नर्वस हो गए क्योंकि उन्हें अगले दिन स्कूल को छोड़ करके जाना था। इस पाठ में फ्रांस के एक स्टूडेंट को, जिसको फ्रेंच नाम से सिंबलाइज किया गया है, प्रतीक के रूप में रखा गया है और उसी को लेकर के ये पाठ रखा गया है। तो उस दिन जब ये फ्रांसीसी विद्यार्थी क्लास के लिए जा रहा होता है तो उसको एक वास्टर नामक जो लोहार है उसको रोकता है कि अभी बहुत सारी समय है विद्यालय जाने के लिए। तभी ये बुलेटिन बोर्ड पर जो है सूचना पट को देखता है और लोगों की भारी भीड़ होती है, लेकिन ये स्कूल के लिए जल्दी में होता है और वहां से भाग करके विद्यालय पहुंचता है। और जब विद्यालय पहुंचता है तो देखता है कि कक्ष का जो वातावरण है वो एकदम शांत था। सभी लोग पहले से वहां पर बैठे हुए थे और यम हैमेल अपनी पोशाक में थे, जिसमें हरे रंग का कोट था, रंग बिरंगी शर्ट थी और एक रेशमी काली टोपी थी जो पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। उसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय पुरस्कार के दिनों के अलावा। और इस फ्रांसीसी विद्यार्थी ने क्या देखा कि यम हैमेल ने इसे डांटा नहीं, जो लैंग्वेज के अध्यापक थे, बल्कि शांतपूर्वक बैठ जाने के लिए कहा। ये जो बालक था फ्रांसीसी विद्यार्थी, वहां पर ये देख करके दंग रह गया कि पिछली सीट पर जो सामान्यतः खाली हुआ करती थी, आज गांव के बड़े बूढ़े लोग वहां पर बैठे हुए थे। और यम हैमेल ने उस दिन जो है सभी विद्यार्थियों को फ्रांसीसी भाषा के महत्व पर पाठ पढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो फ्रांस की भाषा है वो सबसे आसान, सबसे सुंदर, सबसे तार्किक है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। और किसी भी देश के लिए जो भाषा होती है वो एक माध्यम होती है उस देशवासियों के लिए उस कैद से बाहर आने का, जब वो गुलाम हो जाते हैं। उस दिन यम हैमेल बच्चों के लिए बड़ी ही सुंदर सुलेख के लिए कापियां लाए हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था
अल्सास फ्रांस अल्सास। और सभी बच्चे जो है पूरी तरीके से उसको लिख रहे थे और इतने तल्लीन थे कि उन्हें किसी भी आवाज पर कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता था। तभी यम हैमिल ने ये घोषणा कर दी कि ये उनका अंतिम पाठ है। जैसा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अगले दिन से फ्रांसीसी भाषा के बजाय यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और एक नए टीचर यहाँ पर आकर के अध्यापन का कार्य करेंगे। जैसे ही वो विद्यार्थी इस शब्द को सुनता है, उस बिजली दौड़ जाती है और यम हैमेल के वो शब्द याद आने लगते हैं जब यम हैमेल ने उससे कहा, कहो, आप तो कहते थे कि अभी पढ़ाई के लिए बहुत समय है, लेकिन देखो अब आप कहाँ आ पहुंचे। और मैंने बार बार आपको पढ़ाई के लिए कहा था, लेकिन आपके माता पिता ये चाहते थे कि आपको पढ़ाई के बजाय किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम पर लगा दिया जाए ताकि आप कुछ पैसे कमा सको। और दोस्त मेरा भी है, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैं आपको छुट्टियां दे देता था या फूलों या पौधों को पानी देने के लिए कह देता था, तो इसलिए हम सब दोषी हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज हम ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें विद्यालय छोड़कर जाना होगा। और मेरे लिए दुख की बात है कि जो अल्सास के लोग हैं वे सही से फ्रांसीसी भाषा को लिखना पढ़ना और बोलना भी नहीं जानते हैं। वो फ्रांसीसी जो विद्यार्थी है वो बहुत दुखी हुआ कि जब उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया और वो सारी किताबें जो उसे बोझ लग रही थीं अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थीं और अब उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। और यम हैमेल का ये निर्णय कि अब वो अगले दिन से क्लास नहीं लेंगे, ये उसके लिए अब बहुत बड़े दुख की बात थी। सभी लोग क्लास में पूरी तरीके से दुखी थे, निराश थे और लोगों की आंखों में आंसू थे। वैसा यम हैमिल को उस दिन विदाई देने के लिए बैठे हुए थे, जो उनकी 40 साल की वफादारी पूर्ण सेवा थी। इतनी बातें हो रही थी, उसके बाद में जो है सभी लोग दुखी हुए। तभी चर्च की घंटी में 12 बजे और उस घंटी का संकेत हुआ और यम हैमिल ने भी दुखी मन से इशारा कर दिया। सबसे पहले तो उस कुर्सी में खड़े हुए और बोर्ड पर जितना अधिक उनसे हो सका उन्होंने शब्द लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांसीसी भाषा अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने ये संकेत कर दिया कि विद्यालय का अध्यापन कार्य समाप्त हुआ और वे सब जा सकते हैं। फ्रांसीसी विद्यार्थी को हमेशा इस चीज का मलाल रहा कि काश वो पहले पढ़ लेता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया जहां पर अब उसे गुलामी के अंतर्गत रहना पड़ेगा और अपनी भाषा से भी अपने आप को हाथ धोना पड़ेगा। तो जिस आपको पता ही है पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम सीख। अब ये जो अंतिम सीख नामक पाठ है, इसका मतलब यही है कि अगर हम शिक्षा से संबंधित चीज में देरी करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है, किसी भी भाषा वो अपने आप में उस देश के लिए वो माध्यम है जो अब संप्रेषण का एक दूसरे से संचार करने का एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं और एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने राष्ट्र को अपने देश को बचाए रख सकते हैं। ये भाषा ही है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन्हें इकट्ठा करती है। तो ये जो लेसन है वो पूरी तरीके से इस चीज को बताता है कि भाषा या शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर हम शिक्षा से दूर हो गए तो स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं।
शिक्षा नितांत आवश्यक है किसी भी चीज को समझने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, और उसमें भाषा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये जो पाठ है इस प्रकार से सीख देता है कि हमें सर्वप्रथम शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और भाषा का पूर्णरूपेण विकास करना चाहिए। तो ये इस पाठ की संधि थी जो आपको हिंदी में बताया गया। अब इसको इंग्लिश में डिक्टेट किया जाएगा। द लास्ट लेसन इज a very important one by Alfonso Daudet, where he describes about the two districts in France, Alsace and Lorraine, where these two districts are seized by the Prussia ruler Bismarck, and in his leadership there was an order from Berlin for all those districts, especially for the schools, that the French language will not be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Rather, the Berlin language will be taught. M. Hamel has to depart the next day, and the new teacher will join the school next day. So this was the day of the last lesson, and a French student reached the classroom where Yam Hamel was already already on his way to teach. Yam Hamel was dressed beautifully in green coat with filled shirt and a white black silk cap all embroidered. He was very serious and solemn. The class was completely silent, and Yam Hamel was telling them the importance of the mother language. All the old men from the village were sitting on the back benches of the classroom to thank Yam Hamel for his 40 years faithful service as a teacher. The French reached late, but he was asked by Yam Hamel to sit properly at their seat. Those days, Yam Hamel brought notebooks for writing dictation, and there were the round letters written France Alsace on them. Yam Hamel blamed the French for not learning their own language, and also his parents to in the engage him in factory or mill to earn some money. He also for not paying proper attention to his study, rather to hand over him the work of watering plants, flowers, etc. And the French was also busy to play and in other works. Yam Hamel explained them the importance of the mother language as far as the French language. He described that French is the most beautiful, logical, and clearest language in the world, which can be learned easily. And the mother language is considered a key to the present when the people are enslaved in a country. So hence they must learn the mother language, and as long as possible they must guard it. So in this reference, Yam Hamel emphasized the importance of the French language, which is a mother language. And when he declared that it was the last lesson as the order from Berlin that only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine, Yam Hamel declared that it was his last lesson. And as soon as he declared these words, the French had a thunderclap in his heart, as he had started to learn French language somehow to read and write. And now the declaration that Yam Hamel will not teach in the school of Alsace, rather a German teacher will teach in the school of Alsace, was a matter of sorrow for him. Everybody was in tears on that day to listen this kind of words. And they
were sitting on the back benches of the classroom to thank M. Hamel for his 40 years faithful service as a language teacher and to show their respect for them. M. Hamel felt sorry for the people of the Alsace for not able to teach them how to read, write, and speak the French language. But everybody was blamed for it. The people of Alsace had the problem that they always say that there is enough time. They will learn it tomorrow. But E.M. Hamel reminded all of them that it was their words, and now where they had reached now, that they have they had no time to learn their own language. And E.M. Hamel finally finished his lesson, and in the last he wrote on the board and was very sad to dictate his last words. Finally, the church clock struck 12, and Yom Hamel indicated that the class was over, and everybody started in tears and thanked Yom Hamel for his 40 years faithful service as a teacher. And now, this lesson, the last lesson, teaches us the important thing that we must not postpone the important thing is education for tomorrow, because education is considered the most important thing in life to develop ourselves, to develop the skill of communicating language, and to set a new plan and a strategy for the next view or ideology. When the people are enslaved ideology. And for the details in the lessons, I shall discuss the next day line by line strategy as well as the explaining ability and also the important questions based on this chapter. So for those students who are desirous or curious to learn the important lessons from section D, from prose section, and then after the poetry section, then the supplementary section, and with the best strategy can my own channel, your own channel rather, Mr. Official, and hence you will find also the important clues for the oncoming UP board exam as well as the CBSE and other board exams. And for UP board students, I have started as far as the Hindi perspective. I know that Hindi is just kind of a contrasting or opposite approach as far as the preparation is concerned. Because one time you are going to read it in Hindi and the next time you... It's a very good morning to all of you students. We are once again going to join Amit Sir Official YouTube channel, and it is an academic text, and that is the poetry section, which is poem number 2, Keeping Quiet, by Pablo Neruda. A very marvelous poem, and it is an important for not only the academic but also leaving a message to the entire humanity. And in this poem, the Pablo Neruda has a simple theme but which has universal appeal. And this poem, the poet Pablo Neruda describes that he wants to go to count from 1 to 12 to make a silence in the air. He appeals the readers to be keep quiet, and during it, there is not much physical movement, and we will have to stand in an arc for a moment to think for ourselves and about your activity and where we are going to do as far as the aim or purpose is concerned. It is very necessary for all of us that what are we doing and where we are leading. As we know, in the modern world, we are too much engrossed to the money, to gain money without thinking of our future generation as well as
how to save the humanity. We are so much advanced in the society that we have developed nuclear weapons, and we are talking about the war which is with fire and gas. And in such a situation, if there is war, the things will be catastrophic. We shall lose all our creativity as well as the entire human perspective. And after that, the young generation will in great trouble after all the creativity and finding in a strange atmosphere. That's why the poet Pablo Neruda appeals the readers to keep quiet, to think for a moment. It is an introspection, to think deeply about our doing. And also he symbolizes a very nice personification with the lines, perhaps the earth can teach us. Perhaps it means that when we are living beings are ignoring the fact, the reality of life, in such a situation, the earth can teach us to live together with love and friendship, fraternity, which we are going to losing because of the selfishness of our own feeling. And we are ignoring that the entire human being are living on this earth. And whenever we are going to develop, we will to think about our future generation and also about the existence of other living beings. As we find our environment too much polluted that we can't expect to live a peaceful life. In such a situation, it would be an exotic moment when you feel like a strangeness, when you have to maintain a peace and silence, suddenness. But it is the moment when we reflect our activity and our ideology which is surrounding us. And for this perspective, we have to maintain peace to understand ourselves and also the others to avoid the situation like war. The world is full of beauty. The world is full of wonder. The world is full of so many varieties, and it is our responsibility to maintain and protect this. Now, the questions based on this poem is concerned, there are the few important questions suggesting to you. The first one, why does the poet Pablo Neruda appeal the readers to keep quiet? The answer is very simple. The poet Pablo Neruda appeals the readers to keep quiet, to think deeply of themselves and their activity to maintain the peace in the world. Question number 2. What kind of moment it would be? ये किस प्रकार का क्षण होगा? It would be an exotic moment where we cannot spread our arms, legs too much like at that time. What does the poet want to say when he is going to count from 1 to 12? जब वो 1 से 12 तक की गिनती करेगा तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो the poetess wants the readers to maintain a peace and silence to reflect their ideas to their doings. And now we are going to move. There is a poetic device as far as the stranger where there is a line. Perhaps the earth can teach us. Earth is a non-living one, but whenever we are going to present it, the activity like teaching or somewhere is it is just belonging to as an animate, and hence we find it a personification. When something living ones working like when something non-living ones working like living ones, as far as the person is concerned, it is a personification. To the line, perhaps the earth can teach us as a poetic diction and which is a personification. The poem has a universal appeal as far as the maintaining peace is concerned. It is necessary for the entire uh, people in the world to think as we are going to just close to the Third World War, where we are going to talk about the nuclear war, which is a more dangerous than all this, and it may be harmful to the world and the entire living beings on the planet. We have to save the planet to maintain the peace, to think of our selves, to understand ourselves, and to understand others. Now, we have some points based on the central idea of the poem, as Pablo Neruda appeals in this central idea of the poem, Keeping Quiet. In this poem, the poet Pablo Neruda appeals the readers
for an introspection, to think deeply about their own working style, about their own way of lifestyle, where they are leading to. He appeals the readers to maintain peace in the life to avoid the situation like war. When we think about ourselves, we find that what is the reality of life, and then we understand others to make a friendship and to spread love among the people and to save the entire humanity, avoiding the situation like hate and some other ways. The poem is full of moral as well as an universal appeal. To this very the central idea of the poem. Now, as some students feel the difficulty to find the particular terminology as well as the theme of the English perspective, hence I am going to express my view especially on this poem in Hindi version. इस कविता में कवि पेब्लो नेरुदा शांत रहने की अपील करता है। जैसा कि ये जो कविता है, इस कविता में शांति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो है लोग विचार करें कि उन्होंने अपने आप को और साथ ही साथ कितना नुकसान इस वातावरण को फैलाया है। जैसा कि वो लोग पूरी तरीके से कार्यरत हैं और कार्यरत होने के साथ साथ वह यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है। आज हम व्यक्तिगत स्वार्थपरता में धनोपार्जन हेतु इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि शायद हम स्वयं विचार नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस भागदौड़ में कहां पर पहुंच रहे हैं। वस्तुतः स्थिति यह है कि समय रहते अगर हमने ये विचार नहीं किया तो हम अन्य वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे ही, समस्त मानवता को भी नष्ट करने पर तुल जाएंगे। जैसा कि इस कविता में दर्शाया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हरित युद्ध की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे युद्ध की बात करते हैं। अगर इस प्रकार से वो विचारधारा पनपती रही, बिना विचारे उन्होंने कार्य कर दिया, तो ये समस्त मानवता के लिए खतरा होगा। साथ ही साथ जो वन्य जीव इस धरती पर हैं, उनके लिए भी अपने आप में खतरा होगा और यहाँ से सभ्यता के मिटने के आसार है। इसीलिए कवि अंत में निष्कर्ष करता है कि ऐसे युद्ध में विजय श्री तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन जो आने वाली जनरेशंस हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो ऐसे माहौल में रहेंगी जहाँ पर सब कुछ वहाँ पर विचित्र और अजीब होगा और वे नए वातावरण में होंगे जहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वे पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बड़े ही विचित्र रूप में व्यवहार करेंगे। इसलिए जो कवि है वो पाठकों से यही अनुरोध करता है कि वे शांत हों, एक बार मनन और चिंतन करें और ये समझें कि स्वाभाविक रूप से हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हम पुनः जो है उस सामाजिक प्रेम और सामंजस्य को स्थापित करें और मित्रता का भाव रखें, प्रेम से जीवन जिए, ताकि जो शांति है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए जो कवि है वो बार बार इस कविता में शांत रहने की अपील करता है ताकि हम स्वयं कुछ समय के लिए आत्मचिंतन करें और अपना मार्गदर्शन करके जीवन में शांति और सुखमय जीवन की ओर प्रशस्त हों। ये इस कविता का लक्ष्य है। आप सब लोग इस पर विचार करेंगे, इसको सुन करके पढ़ेंगे और अभ्यास करें। परीक्षा आने वाली है तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इसको पढ़ें और कहीं कोई समस्या होती है तो आप अनेकों माध्यमों से सूचित करके उन प्रश्नों का निराकरण कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Very good morning to all of you, the students in this session, and we are now going to discuss about the poem number 3 from class 12th standard, A Thing of Beauty. In this poem, the poet John Keats describes about the beauty, which is not for a short time, but it is for a long one. According to him, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It means the beauty does not fade, but also moves away, and it also gets more attraction. And it helps all of us who are sick, who are downcast, and create a peaceful atmosphere around us to provide us a sleep which is full of rest and an atmosphere where we can take free breath and free thinking. And also, it is a boon for those who are
depressed, who are sick, and who are broken in health, and also who are negative in ideas. A beauty creates an atmosphere where things is just a totally difference. It refreshes all of us with mind, intelligence, and also the creative approach so that we can enjoy the life in peaceful atmosphere. In this poem, the poet glorifies a thing of beauty which always provides a joy for all of us. It has been seen that in man's life there is always stress, anxiety, fear, and depression like things. But whenever think of beauty, which is in different forms, sometimes the physical, and sometimes the spiritual, and sometimes the purity of mind. But the most important thing is purity of mind and the purity of thought, and as well as the purity of spirit. Always flows in man's mind just like a soothing air, and with the help of this, he feels himself comfortable. And in such a situation, it is a tonic for all of them. And whenever we talk about the beauty, especially for all of us, that when we are downcast, when we are depression, then we need something, the positive ideas, which is through the great writers that help us to overcome a kind of depression, a kind of negative approach in life. And as far as the natural is concerned, it is reflected in the poem through trees, forest, and springs, and all of these help the wild animals as well as other creatures in the forest to provide them comfort. For an example, the sheep are enjoying the beautiful things in the nature as sunlight, as the moon light, as well as the water that from the river. And in the forest, there is seen a different types of natural sights, a kind of fragrance by the flowers that is spread out on the soil in the forest. There is musk deer and also the daffodils. That are the flowers that always create a fragrant air in the forest where there is desolation for some time. So these are the things that beautifies as a living one, but now there are also the dead one who become a great in their life and also glorifies all of us with their important writings, lessons that they have stored in their books. And their books, even after the death, always glorifies us, always benefits us, their lessons and the writings. Whenever we read or listen from someone else, they emerge as an immortal drink and somehow force us to a heaven's edge. Thus, the mighty dead ones also have their potential to beautify and glorify all of us. The poem is a metaphorical approach. The line "a thing of beauty is a joy forever" refers to the poetic diction metaphor. And in this poem, the poetess uses the imagery as the keep quiet bower as well as the forest, daffodils, and also a kind of imagery that beautifies the poem in a rhetorical tone. And now the few important questions from this poem are: how does
the poet John Keats regard a thing of beauty? And the answer is, the poet regards a thing of beauty a joy forever. Its loveliness increases and it never comes into nothingness. Question number 2. How does it help the people to provide them comfortable atmosphere? ये लोगों को किस प्रकार आरामदायक वातावरण प्रदान करती है? A thing of beauty creates a bower for all of us to provide us good sleep and a good health to live a life full of comfort. Question number 3. How does it help for those people who are depressed and anxious or completely in stress? A thing of beauty also emerges from thought of beauty, and hence it always guides us to become a positive one in life, and it is an inspiration for those who are depressed and downcast in life. Now the question number next is, how does a thing of beauty prove to be a boon for the simple sheep and other animals in the forest? किस प्रकार से सुंदरता नामक चीज भेड़ और अन्य जीवों के लिए जंगल में वरदान के रूप में साबित होती है? As far as the natural beauty is concerned, it proves to be a boon for the sheep and other living animals in the forest. The sun provides them a heat. The moonlight provides them a humble light, a very comfortable light, and also the springs or the river's water make them a cooling atmosphere in such a hot season. And now the concluding stanza has a few questions to ask. In the concluding stanza, how do the mighty ones help us? जो मृत लोग हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से सहायक होते हैं? The mighty ones leave their writing after their death. That always provides us several types of learning by their important lessons in their text or books whenever we read them. The question next is, how does they come unto us from the heaven? किस प्रकार से वे स्वर्ग से हमारे पास आती हैं? All their writings is just like an immortal drink, and it controls everywhere, and also as an immortal storage of drink, and finally it pours on to the poet from the edge of the heaven. So the poem comes to conclusion and with a reference like this. And the poet has also the conclusion. In this poem, the poet John Keats glorifies the spiritual, natural beauty of the poem, which always helps